आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है और मैं उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ हूँ। कंपनी का नाम है यूनिमेक एरोस्पेस और इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हमारे पिछले वीडियो में मिल गई होगी, जब मैंने प्लांट से कंपनी के बिजनेस को समझाया था, बताया था कि कंपनी क्या करती है और आईपीओ लेकर आने वाली है। अब कंपनी का आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो सामने आ गया है, बेसिक डिटेल सामने आ गई हैं। एक बार पहले आपको बेसिक डिटेल बताते हैं, फिर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि इस आईपीओ को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, इस आईपीओ से जो फंड उन्हें मिलने वाला है उससे वो क्या करने वाले हैं। पहले बेसिक डिटेल्स। तो आईपीओ खुल रहा है 23 दिसंबर को, क्लोज होगा 26 दिसंबर को। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 745 से 785 रुपए का रखा गया है और जो टोटल पूंजी कंपनी इससे जुटा रही है वो 500 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल है। फ्रेश कैपिटल से क्या करने वाले हैं, इसको समझने के लिए कंपनी के टॉप मैनेजर से बात करते हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर अनिल पुतन, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में है मिस्टर रामकृष्ण, जो सीएफओ हैं कंपनी के और होल टाइम डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और मिस्टर अनिल, मैं सबसे पहला सवाल आपसे कि बिजनेस को अब हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो मैं ये ज़रूर आपसे पूछ सकता हूँ कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप बना रहे हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं वो मोस्टली इंडिया के बाहर हैं, एमआरओज इंडिया के बाहर हैं, और आप एरो इंजन टूलिंग बना रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया, कैसे आपने इसको सोचा कि आप इंडिया में ये चीज़ शुरू करेंगे, ये बिजनेस करेंगे? So namaskar to NDTV. The idea was we worked. I personally worked in overseas and as well as India in the aerospace segment for quite a number of years. While working in the leadership roles as well as the execution roles, I kind of realized there's a huge demand for high mix and low volume kind of solution providers. And not many are there in India. I would say most of them were kind of present in the western part of the world. We felt that okay, this is something that we kind of have to leverage the opportunity, and also as India we have a lot of talent pool coming out of engineering colleges, diploma colleges, or also the technical schools like NTTF, GTTC. So I think bridging those talents with the very strong training programs from a skill point of view to meet these high complex engineering demand is something that we thought is going to give a big boost to industry as well as for the economy. मिस्टर राम, मैं आपसे आईपीओ के बारे में ये पूछना चाहता था कि फ्रेश कैपिटल का यूज़ आप कहाँ करेंगे। वैसे मिस्टर अनिल ने बताया कि आप वो कैपेक्स पे यूज़ करने वाले, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग बताइए कि वो कैपेक्स किस चीज़ में होगी। क्या आप मशीनरी ऐड कर रहे हैं, प्लांट को इंक्रीज कर रहे हैं, प्लांट के नंबर्स बढ़ा रहे हैं? Sure. So, अभी 250 CR, we are planning for a fresh issue, उसमें, as you know, in the, RHP we mentioned, three objectives. So, one is, fund used for the capex purposes. With the capex, goes for the purchase of additional machineries, so more than 80 machineries, so we are going to buy, there are CNC machines, which are going to be used for, our, the growth purposes, so what Anil mentioned, the kind of opportunities what we have. Second thing, working capital purpose also we have kept some money, and this is going to be infused in the next 12 to 15 months. Third, to maintain proper margins, I think we are also going to repay our significant portion of the loan, debt repayment also we kept as an objective. So, and yes, we have also have general purpose corporate fund, which is for any kind of activities that not identified as such, can be spent out of. So these are the broad objectives, and one important aspect, for the IPO is, we are into high complex, high mix, low volume segment. Believe me, this is one sector which India never focused as such. Okay, and now that India is heavily focused towards manufacturing, make in India is happening, manufacturing side, and more of aero defense sector, India, most of the OEMs are focusing. The opportunity for the last 2 years is is massive. Okay, and we as a founders, we realize that I think we are the right time, and the opportunity that what India is showing to manufacturers like us, or entrepreneurs like us, need to be taken. So that's where I think the plan of growth has come into picture, and that's where IPO we are raised, and the money is going to be used for the capex expansion and the growth purposes.
सो मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये सही समय है जब इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए देख रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव है और ऐसे टाइम पे वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको बनाने पर फोकस कर सकते हैं और वो कंपनी कर रही है। भले ही उनके कस्टमर्स बाहर हैं, वो लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करके और इसको बढ़ा रहे हैं इंडिया के अंदर। एक चीज़ जो जब मैं पीएनएल को देख रहा था तो मुझे लगा कि आपकी जो रेवेन्यू का जो पार्ट है वो 3 साल में 36 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ के ऊपर चला गया है अब। सो ये जो पिछले 3 साल की ग्रोथ रही वो बहुत शानदार रही। ऑफ कोर्स कोविड का भी एक इफेक्ट रहा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन क्या जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हम समझें अगर कि कितने परसेंट से कंपनी और आगे ग्रो करती रहेगी, तो एक प्रोजेक्शन आपने कुछ निश्चित तौर पर किया होगा कि ये हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, वो ग्रोथ क्या है और उसके फैक्टर्स क्या होंगे? So a growth का important factor is like, I would like to explain here is there is a one concept called compounding effect. The compound effect means, when any organization into the adding more kind of customers or more segment, and they are, whoever are into the journey of getting accredited for more number of SKUs, are bound to get compound effect in terms of revenue. Just to elaborate more, we started in 8 years before, in MRO to aero tooling segment, where engine tooling is one segment. We started with one customer with only one SKU approval. Now the same customer having multiple SKU approval. Second customer again, he over the year on year, he's approving more number of SKU or tools. So and eventually when SKUs getting approved, more SKUs approved, it amount to multiple growth, and more customers added and same process started again, it will have compound effect. And in our case, not just one segment, also we want into another sunrising and high demand segment like nuclear segment, we have entered. So when year on year more customers and more approval process happening, we Unimech, we are seeing multiple growth opportunities. That's where I think leaving COVID year, we always have average 130% CAGR is there, and this will continue going forward, as the customer focus on us, the customer whoever we have onboarded so far will continue to give the opportunities, and the compound effect will continue. This growth will continue. While we don't kind of project the exact, the similar kind of, the growth rate, but we see a good, the percentage of growth in the coming next 4-5 years. Yeah. तो मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि जो कस्टमर रिलेशंस उनके हैं, जो कस्टमर्स का ट्रस्ट उनके ऊपर है, वो कंटिन्यू रहेगा और जो प्रोडक्ट वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर्स लगातार लाइक करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। मिस्टर राम, एक सवाल मैं आपसे मार्जिन्स पर पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो ऑफकोर्स हाई मिक्स एंड लो वॉल्यूम का है। सो मार्जिन्स को मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग होता है, या ये इजी है मेंटेन करना मार्जिन्स को ऐसे टाइम पे भी? I can take Yes. this. I can take this. Yeah, sure. Also. See, while we enjoy the decent margins, I would say better margins compared to our peers, so the positioning is high complex and high risk in nature. Okay, so what it means is, as an industry, we have to target or line up our processes, be it production systems or our quality systems or our digital systems, to get right first time. Okay, so because of the low volume in nature, you attempt maybe 2 products, you produce 2 products, you have to get both 2 products right. So that's the funda that will kind of help you to attain the higher margins. So while you're kind of scaling the business from maybe 10 SKUs to 100 SKUs, for example, okay, so your systems have to be aligned to kind of take that right bigger portion of right first time. So as an industry, we are always more than 90% right first time internally. So that kind of gives a better margin, and we continue to kind of improve that to maintain or improve the margins. सो राइट फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि पहली बार जब प्रोडक्ट बना तो वो क्वालिटी चेकिंग में पहली बार ही सही हो, इंटरनल क्वालिटी चेक में वो पहली बार ही सटीक और सही मेजरमेंट के साथ सही प्रोडक्ट बना हो, इसका ये मतलब। मिस्टर राम, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर कि अब चूंकि आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स होंगे कई सारे जिनके पास आपके कंपनी के शेयर्स होंगे। सो वो आपसे ये सुनना चाहेंगे कि फ्यूचर के लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे देख रहे हैं जो यूनिमेक को और आगे लेकर जाएंगे? Sure. The important factor is there are 5 strategies we have to this enable us to sustain growth or continue to grow this.
And number one is always customer deep penetration. So each customer who are onboarded recently are from the beginning, like we always need to focus, take high high complex kind of new product from them, or high complex tools from them, those kind of high penetration into customer, more accreditation from the customer is very very important. Second thing, into diversification, in the sense like the sunrise segments or high demand segment like nuclear, which we have already entered in, and the heavy focus is going to be there for the Unimech on this sector, because the India is have a bigger plan in the nuclear sector. So kind of diversification, and high complex, high mix, low volume category, we have to focus on. Third one, capex expansions. Okay, so always customer, at least companies like us, he always see that our forward looking approach on the capex and capacity capability creation is very important. That will continue to do that. And the next one is into inorganic growth. Okay, so adjacent, kind of the areas where we can see the industries where we can see better synergy, or a kind of complementary skill we can apply, such industries we wanted to enter into that through inorganic, basically acquisition mode, M&A acquisition mode, but definitely not into a different unknown territory. Okay, it has to be mechanical, high complex, if not high if not high low volume, but at least medium volume kind of segment we want to enter. So M&A is definitely is good going to the growth sector. Yeah, these are the kind of top strategies we are adopting to ensure that Unimech continue to grow for the next many decades. I would add one point to Ram's the statement is the digital infrastructure. Okay, we continuously are looking at our digital infrastructure, looking at bettering or improving them to kind of looking at 5 years the projections, how this system can help us 5 years or 10 years down the line. So that's something that we continuously are looking at investing. So I know without that we would have not grown with the same the percentage from last 3 or 4 years. So I think digital infrastructure plays a very important role as part of our growth. वन लास्ट क्वेश्चन जो आप दोनों में से कोई भी इसका आंसर कर सकता है, क्योंकि रिस्क का एक फैक्टर है। फैक्टर वो ये कि लोगों को DRHP पढ़ के ये ज़रूर पता चला कि आपके 5 कस्टमर्स, जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं, उनसे आपका रेवेन्यू का सबसे बड़ा चंक आता है। सो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये रिस्क भी है? क्या कस्टमर लूज होने का डर भी है यहाँ पे, या फिर कस्टमर्स के साथ आपके ऐसे रिलेशन है जहाँ आपको इस तरह का कोई डर नहीं है? So no, the aerospace, as such, the industry is, customer concentration would be there. Yeah. Because, very fact is, Very small players. the number of airframe companies are only 2 or 3 or could be. Engines are only 4 or 5, and their, approved global licenses, maximum 15. So concentration, would always be there. But the thing is, good part is, entry barrier is very high in this sector, So because it takes many time to much time to get accreditation, and many years to get approved for the many varieties of tools or SKUs in this case, it takes more time, and the kind of system that enable any organization to take up high the growth in this sector, when this all is created, it becomes kind of obvious choice for the OEMs or the customers not to change the vendor that easily. So that's where the entry barrier is there. Now in our case, like the top 4 customers who are contributing significantly, yes, but the good part is like they are from the day one they are there. Like first customer who's a 50% above, he's the day one is there, and second customer who is onboarded second time, I think maybe second year or kind of he's continuing to give good business like that. Each year who are onboarded, he's increasing his value share towards us, so which is a good part, And having said that, the number of customers, yes, it is increased. Last 6 months or 8 months, we have onboarded more number of customers, and who will also start giving more business. So we continue to be a part of the growth, or customer growth also. So a customer prefers to have as part of their growth, and we want them to be as part of our growth. So that's a kind of the mutual relation, and
this has worked for us in our favor, and we see it as an advantage. The The customer advantage, concentration yeah. is an advantage for both of us. ग्रेट ओके कूल सो कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो टॉप 4 कस्टमर्स या टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनसे जो रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री अपने आप में एक छोटी इंडस्ट्री है, कम कंपनियां हैं, तो ऑफकोर्स ये लाजमी है कि ये होना है। एमआरओ जो है वो कम है, उसके हिसाब से ये देखना है कि लाजमी है, कम है। उसके अलावा कंपनी का ये कहना है कि जो उनके पहले कस्टमर थे वो आज उनके सबसे बड़े कस्टमर हैं, वो अभी तक वो कंपनी के साथ हैं। सो ये ओवरऑल कंपनी का बिजनेस को लेकर जो है वो स्टेटमेंट है और ये कहना है कि आगे भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। अब आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए कि आपने बहुत डिटेल में कंपनी के बिजनेस को समझाया और बताया कि आप कैसे ग्रोथ को आगे फ्यूल करने वाले हैं और इस आईपीओ के ज़रिए आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बेसिक डिटेल आईपीओ की बता दूं। आईपीओ खुल रहा है 23 दिसंबर को, क्लोज होगा 26 दिसंबर को और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 745 से 785 का रखा गया है और इस आईपीओ के ज़रिए कंपनी 500 करोड़ रुपये जुटा रही है, जिसमें से 250 करोड़ रुपये का फ्रेश कैपिटल है और मैनेजमेंट ने बताया कि उस फ्रेश कैपिटल से वो आगे क्या करने वाले हैं।